Hi my dear cadets, welcome back to my channel NCC Gyan, your complete guide for A, B and C certificate exam. In this video, I will be covering all important questions related to map reading. This is the part 1, part 2 will be soon uploaded. They are in the as new pattern in the multiple choice question format. So let's quickly start. The first question is, what is a map? Map क्या होता है? Your options are, it is a drawing of the earth's surface, ज़मीन के निशानों की drawing होती है ज़मीन की, और representation of the earth's magnetic field, a diagram of the earth's internal structure और a model of the earth's orbit. हमें पता है मैप जो होता है वो ज़मीन का एक चित्र होता है, तो इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाई कन्वेंशनल साइन आर यूज्ड ऑन अ मैप? मैप के ऊपर रूढ़ी चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है? योर ऑप्शंस आर टू शो द अर्थ्स रोटेशन, to indicate the earth's magnetic poles, to show the earth's rotation or to represent certain artificial or natural features object. यानी कि ज़मीन पर जो प्राकृतिक और जो मानव निर्मित चीज़ें हैं उनकी निशानियाँ. सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर. नेक्स्ट इज, व्हाट डज द स्केल ऑफ अ मैप इंडिकेट? मैप का स्केल क्या दर्शाता है? योर ऑप्शंस आर, इट इज़ द साइज ऑफ द मैप, इट शोज द ओरिएंटेशन ऑफ द मैप, or it predicts the type of projection used for the map, or the proportion between distance on the map and distance on the ground. यानी कि ज़मीन पर जो दूरी है उसके अनुपात में मैप पर जो दूरी है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. इट शोज द proportion between distance on the map and the distances on the ground. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रिड लाइन्स ऑन द मैप? मैप के ऊपर ग्रिड लाइन का क्या पर्पस है? ऑप्शंस आर, टू मेजर डिस्टेंसेस, टू इंडिकेट द मैप स्केल, टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, or to facilitate or giving and reading grid reference. Since these are grid lines, they are used for grid reference. So what will be the right answer? Option D will be the right answer, to facilitate giving and reading the grid reference, जिसको GRB कहते हैं. Next, what do the grid reference on a map indicate? ग्रिड रेफरेंस मैप पर क्या दिखाती है? ग्रिड लाइंस ग्रिड रेफरेंस दिखाती हैं, और ग्रिड रेफरेंस क्या दिखाती हैं? योर ऑप्शंस आर, द लोकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, the location of the grid lines, the location of features on the map, और the location of the countries. तो क्या दिखाती हैं ग्रिड लाइन मैप पे? ये सभी फीचर्स की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाती हैं. तो इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Now, which organization prepare topographical maps in India? हमारे देश में topographical maps कौन सी organization बनाती है? And your options are National Geographical Survey, Survey of India, Geological Survey of India, Indian Space Research Organization. Since it is a map is made by the which option? Right option is Survey of India. Maps are made by Survey of India. Next question. What are the vertical lines on a map called? मैप के ऊपर जो vertical lines होती हैं, जो सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Your options are, these are called latitude, longitude, equator और prime meridian. Quickly recall, you must have read this in your SST notebook or SST subject in your school time. So खड़ी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? Longitude. खड़ी मतलब long, vertical means long. So in this way you can relate. Next is, what does relief refer to in a topography? Topography में relief किसको कहा जाता है? Your options are, the distance between two contour lines, the shape of the ground in a vertical plane, the angle between true north and the magnetic north, or the slope of the ground. So what will be the right answer? Relief represent the shape of the ground in the vertical plane. Ground की क्या shape होती है एक vertical plane में? Next, हाउ इज रिलीफ रिप्रेजेंटेड ऑन मैप? अब रिलीफ को मैप पे किस तरह दिखाया जाता है? अभी पीछे क्वेश्चन में था कि रिलीफ मैप पे क्या दिखाते हैं, और दिस क्वेश्चन मीन्स रिलीफ मैप पे किस तरह दिखाई जाते हैं. योर ऑप्शंस आर बाय शेडिंग, बाय कंटूर लाइंस, बाय स्पॉट हाइट्स, और all of the above. Since they shows the position of the ground on map, so all these features are used to represent a relief. Now, what is contour line? Contour line क्या होती है? A line that shows the direction of true north, a line of the earth's magnetic field, a line that represents the slope of the ground, or a line that connects all the points of equal height above sea level. कंटूर क्या होता है? कंटूर दिखाता है कि कोई भी ग्राउंड सी लेवल से ज़मीन से कितना ऊपर है. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. तो कंटूर लाइन दिखाती है कि इट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिलेटेड हाइट. नेक्स्ट, व्हाट आर द कार्डिनल पॉइंट्स? कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉइंट्स ऑन द कंपास, पॉइंट्स ऑन मैप वेयर एलिवेशन इज मेजर्ड, points on a map where contour lines intersect,
or the four main compass direction, the north, south, east, west, are known as cardinal lines, cardinal points. Cardinal points are basically known as directions, so all four direction will be the right answer. Option D is the right. Next, the direction of north pole from the observer is known as, देखने वाले से north pole की दिशा को क्या कहा जाता है? Your options are, it is known as true north, it is known as magnetic north, grid north, or bearing. See, north pole is a true definition, true direction of the north, which a literal man can see easily. So right answer will be true north, and it is indicated by pole star. Next is, what is magnetic north? Magnetic north क्या होता है? Options are, the direction of the north pole from the observer, north as per the grid on the map, the angular difference between grid and the true north, or the point to which a magnetic needle points when freely suspended. At is a magnetic north, it means it is represented, it is found by a magnetic needle. So option D will be the right answer. It is the north indicated by compass. Next question we have, what is the difference between ट्रू नॉर्थ एंड दी मैग्नेटिक नॉर्थ? ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के अंतर को क्या कहते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर, इट इज नोन एज मैग्नेटिक वेरिएशन, इट इज नोन एज ग्रिड कन्वर्जेंस, इट इज नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स, और अ gradient. Since it's a difference of true north and magnetic north, so it is known as magnetic variation. Next question we have is question 15. What is grid convergence? Grid convergence क्या होते हैं? Your options are, it is the difference between true north and magnetic north, or it is the angular difference between grid north and true north, it is the slope of the ground, or the angle formed by a line joining two points. So what will be the right answer if you have read it thoroughly? In this case, grid convergence is related to grid and true north. So option B, the angular difference between grid north and the true north is called grid convergence. Next question. What are contours typically represented on a map? मैप के ऊपर contours क्या, किस तरीके से, किस तरह दिखाए जाते हैं? How? Options are, in blue color, in brown color, in green color, or in black color. Quickly remember, contour represent ground. Ground में क्या होती है? मिट्टी. मिट्टी का कलर क्या होता है? Brown. So right answer is option B, in brown color. Next, what is the clockwise angle formed by a straight line joining two points and the direction of the north called? North clockwise angle जो दो पॉइंट्स को जोड़ता है, जिसमें एक लाइन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? योर ऑप्शन आर, इज कॉल्ड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, bearing, or altitude. It is called the bearing. It is the angular difference between two objects on the ground. Next, which type of compass is easier to use and less sensitive? कौन सा ऐसा कंपास है जिसको आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और जो लेस सेंसिटिव है, जो मैग्नेटिक से फील्ड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता? एंड ऑप्शंस आर, इट इज़ ड्राई कंपास, इट इज़ लिक्विड फिल्ड कंपास, मैग्नेटिक कंपास, और ब्रोकन कंपास. ब्रोकन कंपास इज ऑफ नो यूज, सो ऑप्शन B is the right answer. It is liquid filled compass. It is easy to use and it is less sensitive. Next question we have question number 19. Who controls and funds the global positioning system? जिसे हम GPS कहते हैं, उसको कंट्रोल और उसकी फंडिंग कौन करता है? योर ऑप्शंस आर, यूनाइटेड नेशन, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी. एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. नाउ व्हेन इज द मैप सेट टू बी सेट और ओरिएंटेड? मैप को सेट कब कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर, व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, when the compass points to magnetic north, when the map is folded neatly, or when the true north on the map points to the true north on the ground. It map set तब होता है जब मैप पे जो दिशा उत्तर की तरफ है वो ही ग्राउंड में भी उत्तर की तरफ होती है. तो राइट ऑप्शन इज दी डी, when north on the map represent north on the compass. Now next, what are the two methods of setting up a map? मैप को सेट करने के दो तरीके क्या हैं? Your options are magnetic method and true method, by compass and by object on the ground, by using a protractor, or by using a ruler, or none of the above. So right answer is the option B, by compass and by the object on the ground. मैप ग्राउंड पे, मैप से हम पता लगाते हैं कि कौन सा ग्राउंड ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, और कंपस से हम पता लगाते हैं कि ग्राउंड पे उत्तर दिशा किस तरफ है. नेक्स्ट, विच स्टार इंडिकेट्स ट्रू नॉर्थ? कौन सा स्टार ट्रू नॉर्थ बताता है? ऑप्शंस आर, सीरियस, पोलैरियस, और जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं, वेगा, या फिर बेटेलिगस.
I have already told you, since it is a true north, it is indicated by pole star. So option B is the right answer. Next is, which method is used to identify objects from the ground on the map? किस तरीके से आप वो चीज़ें ऑब्जेक्ट यानी चिन्ह भूमि चिन्ह मैप पर ढूंढते हैं? योर ऑप्शंस आर बाय यूजिंग बियरिंग एंड डिस्टेंस मेथड, by direction and distance method, by estimation method, or by all of the above. And the right answer is all these are the methods to find object on the ground. Next is, what type of views does Google Map satellite view provide? Google Map का satellite view किस तरह के view provide करता है? You must have been using in your daily life in your mobile phones this app. And the right options are side view, bottom up view, top down or bird's eye view, or none of the above. As we know, it shows view from the sky. So the right answer is option C, top down or bird's eye view. Next question, when was the Android app for Google Map was first released? Though we must have been using it daily, very few of you have been known about it. And options are September 2008, June 2012, September 2012 और January 2017. Google Map की Android app को कब introduce किया गया था? And the right answer is, it is introduced in the month of September 2008. Next question we have, question number 26. What features was added to Google Maps in March 2011? March 2011 में Google Map में कौन से features add किए गए थे? And your options are street view, indoor maps, real-time traffic conditions, or route planning for the air travel. And the right answer is indoor maps. Indoor maps are introduced as a feature in Google Map in March 2011. Next, what does the trusted contacts allow users to do? Trusted contacts जो feature है वो users को क्या allow करता है? Your options are, it allows shares location with your friends and family, access remote desktop or access virtual tours of museum, or none of the above. We can relate it, trusted contacts. Your trusted contacts will be contacts of your friends and family only. So option A is the right answer in this question. Next question, what has taken over the majority usage in the map reading training? Map reading में majority usage किस चीज़ से होती है? Your options are digital maps and artificial intelligence, traditional paper maps, GPS devices, or none of the above. As it is an era of artificial intelligence, so right answer is option A, digital maps and artificial intelligence. Next question, there are two types of prismatic compass. Which are they? Prismatic compass दो तरह का होता है और वो दोनों कौन से हैं? Your options are, it is fire and forget, it is solid or gel, it is dry or liquid, or none of the above. And the right answer for this question is prismatic compass of two type, and they are of dry and liquid. So option C will be the right answer. Next question, GPS means, GPS का मतलब क्या होता है? अभी हम, if you can quickly recall, हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी. And the options are global positioning software, global parking system, global planning and survival, or global positioning system. You must have been using it on your daily life. And the right answer is option D, global positioning system. Thank you friends for watching this video. Do share this video with your friends, other cadets, so as they can secure good marks, and also comment your viewpoints in the comment section for us to improve and to solve your doubts. Thank you.